पारं ते परमविदुषो यद् सदसि स्तुति ब्रह्मादीना मपि तदवसन्ना त्वयि गिरा अथा वाच्य सर्व सुमति परिणामा विधि गुणं ममापे स्तोते हर निरपवाद परिकर अतीत पंथानं तव च महिमवान् अतद्व्यावृत्यां चकितमपि दत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय पदे तर्वाचीने पतति न मन कस्य न वच मधुस्फीतावाच परममृतं निर्मितवत स्तवं ब्रह्मं किंवा अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ममाते तां वाणी गुणकथन पुण्येन भवत त्ववेश्वर्ययत् च जगदुदय प्रलयतु त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु सुगुणभिन्नासु तनुषु अभव्यान्यामस्मि वरदरमणीयामरमणे विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतयके जदधिय किमीयं किं काय सकलु किं पाय स्त्रीभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अत्वक्वश्वेतय वयनवनवरद्वस्तो तजय कृतं कोऽयं काश्चिन् मुखरेति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमयवयवन्तो जगताम् मतिष्ठातारं किं भविदिर्दात्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरतैमे त्रयी साङ्ख्यं योगं पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रवीणे प्रस्थाने परममिदमदपत्यमिति च प्रवीणे प्रस्थाने परमिदमदपत्यमिति च प्रवीणे प्रस्थाने परममिदमदपत्यमिति च रुचीनां स्वचित्र्यात् जुकुटिलननापापतुषां नृणामेको गम्यं त्वमसि पयसामर्णैव महोक्षं पटवाङ्गं सटवाङ्गं परशुयां भस्मफलिनं कपालं चयति यत् वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां हृदिं सदति
विदुषोयात् सदसि श्रुति ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयिरा महिम्नं पारं ते परमविदुषोयात् सदसि श्रुति ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयिरा मपि तदवसन्नास्त्वयिरा मपि तदवसन्ना